Build it. On the issue of crony capitalism, when the issue was raised in the parliament, Prime Minister Modi did not, in his reply, name Adani even once. He was talking about everything else. So is this but what the Congress is saying or you're saying it? Either way, I'll answer it, but I'm curious. the question is mine, but it's a valid question, ma'am. The court is looking into it, right? Thank you. Archana. My question is Your on mic is. my question is on cryptocurrency. Definitely there has been a bill, but then it has been delayed. But in current scenario, like what we are witnessing, lakhs of youngsters are putting their money into it. And recently, Hong Kong has already planning to declare it as a legal tender. So what's India's take on it? Because definitely there was a quote as well that during India's G20 presidency, the country will take this as a, what all can be the best, definitely we'll look into it. So what is the government's stand into it? Well, this is also on the agenda of the G20 because we think technology-driven crypto asset creation and buying and selling of assets in the crypto world will have to have international cooperation because they can be anywhere but operate in India. They can be in India but operate anywhere else as well. But in order that the concern that you voiced about youngsters going into it, both the regulators and also the National Deposit, the Securities Deposit Center has also done a lot of campaign, and that campaign continues every now and then to alert people that this is a high risk area and they should be careful. But as regards the bill, the discussion is continuing, and the moment we have something, we'll let you know. Yeah, but in the current scenario, when because definitely we are seeing these Adani shares, the share market going a little bouncy, I don't think that campaign has been very effective. So are there any more such plans to make the youths aware of it? The campaign will continue, ma'am. Okay, fine. Yes, this is Yash Goel with the Statesman. I have two questions. One, क्या आपका ये जो बजट है इस साल का जो 23 and 24 का है, क्या ये महंगाई कम करेगा या क्या करेगा? दूसरा ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने, हिमाचल ने और राजस्थान ने ओपीएस लागू किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम अगेंस्ट दी एनपीएस, और वो फंड्स मांग रहे हैं कि फंड्स दिया जाए. और हरियाणा में भी आज इस बारे में काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं. तो इन दोनों के बारे में आपका क्या हरियाणा सरकार हैं? क्या बोल रहे हैं? हरियाणा में पीपल आर प्रोटेस्टिंग इन हरियाणा आल्सो फॉर डिमांडिंग द ओपीएस. हाँ. इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए मैंने बजट रिप्लाई के द्वारा एक नहीं बहुत सारे कदम जो केंद्र सरकार ने उठाया उसको लिस्ट आउट किया. उसमें मैं इस उदाहरण के लिए 3-4 आपके सामने रख रही हूँ. बहुत सारे स्टेप्स हमने उठाया. दलहन का कल्टीवेशन के लिए बहुत इंसेंटिव्स किसान के लिए दे रहे हैं, जिससे आज नहीं कल परसों अगले साल अगले क्रॉप में दलहन प्रोडक्शन भारत में उत्पादन ज़्यादा हो. इस बीच में शॉर्ट टर्म मेजर के नाते जहाँ से भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मसूर हो, मूंग हो, जो भी दलहन, उसका ड्यूटी सब घटा करके वी ब्रॉट इट डाउन टू सिंगल डिजिट्स और कंप्लीटली रिमूव्ड, जिससे इंपोर्ट सुविधाजनक हो, जल्दी हो और सस्ते में दलहन भारत में मिले. सेकंड, एडिबल ऑयल्स के लिए पिछले 3 साल से लगातार इंपोर्ट फ्री, ऑलमोस्ट फ्री कर दिया, जिससे जहां ऑयल पाम क्रूड आना है या पाम रिफाइंड आना है उसका भी हमने ओपन कर दिया, जिससे एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन सप्लाई इजी हो जाए और सप्लाई भी खूब होना चाहिए. सो एंड इन टर्म्स ऑफ व्हीट एंड राइस, आपको ऑलरेडी मालूम है पिछले कोविड के साल से 2020 से, क्योंकि सीरियल्स गेहूं हो, चावल हो और कुछ हद तक एक दाल हो,
एकदम गरीब लोगों को मुफ्त में देना। पिछले साल तक हमने, पिछले दिसंबर तक हमने 5+5 जहां वो खरीद रहे थे, 5 प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने फ्री में दिए, जिससे उनके कम से कम रोटी बनाने के लिए आटा, मतलब गेहूं चावल उनके यहाँ मुफ्त पहुंचे। सो गरीब का देखभाल करते हुए जिनको फ्री में मतलब सस्ते में मार्केट में एडिबल ऑयल हो, दलहन हो मिलना है, उसके लिए इंपोर्ट भी जहां ज़रूरत है उसका भी बढ़ाते आ रहे हैं, जिसके कारण ही नवंबर में आप देखे होंगे इट केम डाउन बिलो 6%। 6% जो टॉलरेंस बैंड बोलते हैं, 6 से ज़्यादा ना हो, कंट्रोल में रखें आरबीआई, 6 के नीचे 5.8 तक आया। और अभी भी होलसेल प्राइस इंडेक्स शायद पिछले 12 वीक्स और 24 वीक्स में, वो मैं करेक्ट करना चाहती हूँ, 24 शायद 24 वीक्स सबसे लोवेस्ट लेवल में आया है WPI। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है और कंटिन्यूअस उसमें ध्यान देते रहेंगे। मगर मैं एक CA से पूछना चाहती हूँ, इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड ऑन इन्फ्लेशन एंड। So the increase in the inflation rate in January compared to December was due to the base effect coming from the sudden outburst of heat wave in March last year when the stocks got depleted, and therefore we see this as a temporary phenomena. And second, we have seen that the inflation pass-through coming from imported prices, whether it is metals, minerals, crude oil or edible oil, passing on to CPI, that has gotten through already. Therefore, we don't see a second round effect coming from those wholesale prices also, whether it is crude oil or edible oil or pulses. So what the RBI has projected in its inflation forecast for 23-24, seeing the inflation rate coming down gradually towards the 5% level by the second half of the next financial year 23-24, that still remains the most likely prospect for inflation. विवेक एंड देन सोमनाथन प्लीज, 1 मिनट आपको जवाब देने। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बोला कि बहुत से स्टेट गवर्नमेंट उसमें शिफ्ट कर रहे हैं और बाकी कई जगह से भी डिमांड आ रही है। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ट्रेंड बहुत अच्छा नहीं है और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटी को पोस्टपोन कर दे रहे हैं। एम्प्लॉयज़ को ऐसा लग रहा है कि उनको फ़ायदा है, वो है कि नहीं है ये भी एक देखने वाली बात है। और जहाँ तक ये बात है कि वो स्टेट गवर्नमेंट अपना शेयर वापस मांग रहे हैं, उस बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि लॉ बड़ा क्लियर है कि स्टेट गवर्नमेंट को वो पैसा नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो पेंशन है न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत वो पैसा एम्प्लॉई को बिलोंग करता है और ये एक एग्रीमेंट एम्प्लॉई और एनपीएस ट्रस्ट के बीच में है। और अगर वो प्री मैच्योर एग्जिट करता है एम्प्लॉई रिटायरमेंट एज से रीच करने से पहले, तो उसके अलग नियम हैं जिसके अनुसार उसको 80% एन्युटी के शेप में और 20% एक लमसम मिलता है। तो जहाँ तक स्टेट समझ रही है कि हमें वापस मिल जाएगा, आई थिंक वो फिलहाल जो नियम है उसके हिसाब से संभव नहीं है। सोमनाथ, मैं इसका जवाब मुश्किल से हिंदी में देने के लिए कोशिश करूँगा। ये राज्य सरकारों के लिए no, he is okay with English. He's okay with English? Okay. See, first of all, on the point that has already been clarified by the Secretary Financial Services, return of money. I think most of you probably have EPFO accounts. The analogy is if an employer goes to the EPFO and says, look, I have reached an agreement with my employees. I would like to take back the employee share and the employer share, give it to me. The EPFO will not agree.
because the moment the money is credited to the employee's account, it belongs to the employee legally and can only be disposed of in accordance with the terms of the enactment which governs the pension fund. That money belongs to the employee, cannot be reclaimed by an employer under any circumstances. That's the legal position, and that has been clarified on legal authority, which is why the Government of India is in no position, or the Pension Fund Regulatory Authority is in no position to return that money to any state government. It's just not legally possible. And the analogy, as I said, is if an employer approaches the EPFO and says, look, we have done an agreement with our employees, give us the money back, it's not possible. It's a labor protection provision, and it is not possible for the government to give back. That's the first point. Now, coming to the second point, I'll give you only an economic answer. It is, of course, for each state government to decide how they deal with issues relating to their own employees. It is not a matter for the central government to decide. But I will make 2 points. First, every state government has limited resources. Their resources come from share of central taxes, a certain amount of borrowing, and some taxes which they levy on their own, which are principally on petrol, diesel, and alcohol. So if there is to be an increase in benefits to be given to one class of society, namely government servants, if there has to be an increase given to that class of society, it can come from only 2 sources. One, there can be an increase in state taxes, for example, on petrol, diesel, alcohol, etc. Or it can come by transferring resources away from non-government servants to government servants, because the budget available for other purposes like welfare, development will have to be offset to the extent that additional benefits are given to government servants. So it's a simple equation. There is no free lunch anywhere. So if the decision is taken, it's a choice between giving more to government servants while giving less to non-government servants. And as far as I know, there is no state in India where government servants are a majority. This is the first point. The second point is, so there is an issue of inter-group equity here. It's a balance. It is for each government to choose that balance between the government servants and the non-government servants. The second point is there is an issue of intergenerational equity. In the old pension scheme, it is an unfunded pension scheme, which means that the employee works today, he gets his salary today, but the pension costs are not accounted for or paid today. They are paid when the pension becomes due. For the people in the new pension scheme, the initial years when pensions will become due are after 2030, because the normal service career in government is at least 30 years. So those who have been on the new pension scheme, hardly anybody is going to retire between now and 2030. Small numbers may retire, but the large number is post 2030. So initially, it will appear as if the costs are zero or low, because there is no pension to be paid for the next few years. But when the pensions begin to come in, pensions will have to be paid without making any provision. So in the old pension scheme, the liability gets deferred to other governments and other generations. It is a choice for each government to make. But the fact is there's an intergenerational equity issue. Should the current generation pay for the pensions accrued in the current generation, or should our children and grandchildren pay for the pensions of those who are working now? In the new pension scheme, each year the amount that is due for a person's pension has to be paid into the pension fund. It is fully funded. There is no burden on the future. When the person retires, the pension comes from the fund and not from the government. So essentially, as my colleague said, if you shift from NPS to OPS, the burden is getting shifted from current governments and current generation to future governments and future generations. Initially, in fact, the governments may see a benefit because they don't have to make the pension contribution. So there could actually be a fiscal benefit in the short run, but this would be more than offset by a huge lag. Which I want to leave you with, January, was cereals and related products, which has a weight of about 12.4% in the overall CPI basket, and that had the maximum inflation rate. But you must also take into account the fact that bulk of the Indian population, because they are given free grains and pulses and don't pay for it, strictly speaking, this weighted average price of cereals for the Indian public has to take into account the fact that nearly 800 million of them pay zero price for a particular quantity of cereals, which many other countries are doing so in their calculations. Since the pandemic started, several countries in Asia and in the West have been giving subsidized food or energy,
And when they calculate their CPI, they take into account the fact that some segments of the population pay the market price and some segments of the population do not pay the market price at all, and therefore the weighted average price goes into the CPI calculations, which India does not do. And therefore, the stated CPI or the stated increase in the grains prices is not exactly what all consumers bear. And to that extent, the stated inflation rate overstates the underlying inflation rate. Thank you. Madam, this is Manish. Yes, madam, this is Manish. Madam, state government, especially Rajasthan government, is saying that devolution बढ़ाया गया है 15th फाइनेंस कमीशन में, बट जो स्टेट गवर्नमेंट्स को फंडिंग पैटर्न है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का, उसमें जिस तरह का चेंज किया गया है उसकी वजह से जितना भी बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? और दूसरा एक था कि जो रेपो रेट की वजह से होम लोन्स के जो रेट्स बढ़ रहे हैं लगातार, उसमें क्या गवर्नमेंट किसी तरह का इंटरवेंशन करेगी? आपके पहले सवाल के बारे में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के प्रक्रिया में कोई चेंज नहीं है. अभी भी मेन स्ट्रीम स्टेट्स जैसे राजस्थान है, वहाँ 60% सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करता है और 40% राज्य सरकार. लेकिन उसमें पहले क्या होता था, और मैं राजस्थान के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बाद में मैं राजस्थान के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन ये पैटर्न था कि जब भारत सरकार कुछ पैसा रिलीज़ करते थे वो स्टेट ट्रेजरी में जमा होता था और उसके बाद उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन द कंसर्न्ड स्कीम होने में बहुत देर होता था और उस टाइम तक वो स्टेट के वेज एंड मीन्स को सपोर्ट करता था. लेकिन जो इंटेंडेड पर्पस है, जो स्कीम, जो जन कल्याण के लिए जो प्रक्रिया स्कीम था, वो होता नहीं था. अब 2021 से एक नया सिस्टम है जिसको हम SNA अकाउंट सिस्टम कहते हैं कि भारत सरकार का पैसा जो रिलीज होता है वो 21 दिन तक स्टेट के ट्रेजरी में रह सकता है. उसके बाद 21 दिन के बाद उसको एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को, और 40 दिन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर उस अकाउंट में जाना चाहिए. फिर उस अकाउंट से स्कीम का जो खर्च होता है वो अकाउंट से होता है. इसके वजह से हमें साफ दिखता है कि हर स्कीम में कितना पैसा किस स्कीम में किस राज्य सरकार में गया है, क्या वो उस स्कीम के लिए यूटिलाइज हुआ कि नहीं, क्या स्टेट गवर्नमेंट का शेयर मिला है कि नहीं. ये चेंज हमने किया है और ये राजस्थान के लिए नहीं किया है, पूरे भारत में हर राज्य के लिए ये नया सिस्टम है. इसमें सिर्फ ट्रांसपेरेंसी का ऑब्जेक्टिव है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अगर ये अमाउंट यूटिलाइज हो जाता है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तुरंत हम रिलीज कर देते हैं. इसमें कोई देयर इज नो ब्लॉकेज, नथिंग. इफ द प्रीवियस इंस्टॉलमेंट इज स्पेंट along with the counterpart share of the state, money is being released promptly and there are no delays. Now, as regards the larger point which you meant about resource flows, I just have a few figures for you to be aware of. The total tax devolution to Rajasthan in 2021 was 35,576 crores. In 2021-22 was 54,031 crores. And 2023-24 revised estimate is 57,231 crores. So there's a substantially rising amount of central tax devolution. In addition to this, in the year 2020-21, 20-21 में एक एडिशनल बोरोइंग का परमिशन भारत सरकार ने दिया था, जिसमें राजस्थान को 21,301 करोड़ फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिला था. और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 21-22 में राजस्थान को 5,186 crore rupees were received in Rajasthan in 21-22 as additional borrowing because they had met the capital expenditure target. Power sector reforms के लिए 21-22 में 5,186 crores was given to Rajasthan. फिर revenue deficit grant which is recommended by the Finance Commission, Rajasthan has received 4,862 crores this year. और इन दी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन्स जो है उसमें 20-21 में 1,002 करोड़ राजस्थान को मिला था. ये इंटरेस्ट फ्री कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन है. वो स्कीम के पहले साल था जिसमें 10,000 करोड़ का प्रावधान था, उसमें 10% राजस्थान को मिला, मोर देन एनी अदर स्टेट. और 21-22 में 692 करोड़ मिला और इस साल राजस्थान को 2,962 करोड़ का
प्रोविजन दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट फ्री लोन का। मेरा कहना का ये मतलब है कि there is no specific state specific approach, a common approach is used to all states, and Rajasthan has been getting its fair share of both devolution and centrally sponsored schemes as well as the capital expenditure loans and other borrowing permissions. Thank you. होम लोन्स के बारे में यू वांट टू से विवेक? आपने ये बोला कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से, रेपो रेट के बढ़ने से होम लोन्स का रेट बढ़ गया है। तो अब जैसा मैडम ने आपको पहले क्लैरिफाई किया कि जो महंगाई की दर बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास एक इंटरेस्ट रेट का शस्त्र है जिसको वो इस्तेमाल करता है, जिससे कि रेपो रेट बढ़ता है, और रेपो रेट के बढ़ने से सारे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो होम लोन का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी सरकार ने जो गरीब लोग हैं उनकी आवास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 77,130 करोड़ का बजट था पिछले साल, नेक्स्ट ईयर में यानी कि 23-24 के लिए इसको बढ़ा करके 79,590 कर दिया है। तो एक तरफ ठीक है वो बढ़ रहा है, 66% इंक्रीज। तो जो No, wait a minute. No, it's also for poor. Huh? If I had addressed only the middle class, you will be the first person to say middle class को कम से कम कुछ तनख्वाह मिलता है, गरीब के लिए क्यों नहीं करते? इकोनॉमी में हर वर्ग के लिए इस बजट में हमने कुछ ना कुछ किया है। सेक्रेटरी साहब वही हाईलाइट कर रहे हैं, पुअर के लिए आवास योजना के तहत, और उसमें 66% इंक्रीज है, 79,000 करोड़ है अलॉटमेंट बोथ रूरल एंड अर्बन। मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल होम्स 45,000 तक उनका एक होम खरीदने में भी इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। और इससे मैं एक विषय में आज का सुबह का बजट के समय में भी जिक्र किया, जब इंटरेस्ट रेट कम रहता है, यही मिडिल क्लास का फिक्स डिपॉजिट और यही मिडिल क्लास का सीनियर सिटीजन का डिपॉजिट, उसमें कमाई कम हो जाता है क्योंकि इंटरेस्ट अर्निंग कम्स डाउन। पिछले 3-4 साल से इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहने की वजह से उनका फिक्स डिपॉजिट से कमाई बहुत ही घट गए थे। अभी जब इंटरेस्ट रेट गोज अप, मिडिल क्लास का डिपॉजिट छोटा कम जो भी वो रखते हैं मेहनत की कमाई, उसका अभी इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, वो भी उनका आमदनी का एक रास्ता है। Ma'am, this is Shrikant from Times of India, Jaipur. Your budget proposals actually reflects the thrust on the transition to green energy. You have given BGF for battery manufacturing. There is focus on pumped hydro storage also. And earlier the green hydrogen policy was also launched. You have touched upon those policies also. But don't you think that in going forward, storage would be critical for the growth of this sector, and the government has already set targets like 2030, 2070, and in that regard, have you missed an opportunity by not allocating some funds for research and development? Because you have seen what has happened in telephone handset manufacturing. The country used to depend completely on imports, and you have also seen the country used to depend completely on imports for the solar panels also. You have brought in some policies where the Indian manufactured panels can be only used. So don't you think that you have missed an opportunity by not allocating some fund for research and development in storage technologies? Because storage would be the real focus going forward, and world over, a lot of funds are focusing on storage technologies. But I thought in the last budget itself I had mentioned about PLI extension for storage and advanced chemistry, batteries and so on.
So that has been an emphasis from last budget and this budget also for renewable energy sector in all its aspects. We have given enough incentives and we are looking at how it's developing, and from the PLI we are able to see there's a lot of interest, not just in this area but in also other areas. I know you're specifically going on harping on R&D. R&D is an area in which the National Research Fund has got huge amounts of money because we consolidated all the otherwise widely scattered kind of government funds waiting for research. All of them have been brought under the National Research Fund, and that will be used for all such purposes through the DST, Department of Science and Technology. They will take care of giving funds for research as well. Like you did for the diamonds. That's not research. It is already looking at that particular seed material which is required for production of lab-grown diamond. India has the capacity. We are only trying to, through the IIT Madras, trying to have a scaling up proposition for seed production. May I supplement one? On this, what Madam said, the Advanced Battery Cell PLI scheme, I'm trying to answer your question. That is, on the Advanced Battery Cell scheme, it is in essence also a scheme which incentivizes R&D, because the way that scheme is designed is, incentive is given when you reach a particular level of concentration of energy storage. That may require R&D to reach that, but our emphasis is not on unproductive R&D. We are not giving any money for expenditure or R&D. We give money when you successfully complete an R&D and come with a product which meets certain energy density standards. So it is intrinsically also supporting R&D. Last question, Z Rajasthan, Shashi. मैम शशि मोहन जी राजस्थान से। मैम अभी सोमनाथन जी ने कहा कि देयर आर नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, लेकिन केंद्र सरकार आटे दाल चावल के जो गरीब लोग हैं उनको फ्री पैकेट बांट रही है। राजस्थान सरकार भी ऐसा कर रही है, यूपी सरकार भी ऐसा कर रही है। राजस्थान सरकार 100 यूनिट बिजली देने की बात करती है, 500 का सिलेंडर। तो आम आदमी डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि कौन सा तो रेवड़ी कल्चर है, कौन सा इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा, कौन सा कॉमन मैन को उसको सर्वाइवल के लिए बेनिफिट करेगा? ये मैं बहुत सारे मेनी टाइम्स इसको मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब सरकार के वित्तीय परिस्थिति ठीक है और वो उनके बजट के द्वारा कुछ स्कीम चला पाएंगे, उसको फंड कर पाएंगे, जैसे बिजली किसानों का कुछ स्टेट्स में कर रहे हैं, मैं उसको सही या गलत नहीं बोल रही हूँ, मगर वो ऐसे स्कीम चलाएं जिसका पैसा आप ही के पास है, आपके बजट में वो डालेंगे, असेंबली में पारित करेंगे, फिर उसको देते रहेंगे। अगर आपके वित्तीय हालात इतना अच्छा नहीं है और आप कुछ ना कुछ देते जा रही हो, उसका बजट में भी दिखा नहीं रहे, बाहर रख रही हो, बाहर से ऋण उठा रही हो और उसका पेमेंट किसी और तरीके से आप प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको वैसे के वैसे छोड़ दे रही हो, बजट में उसका आइटम नहीं है, फिर कौन पे करेगा? उस नजरिया से फिनांस सेक्रेटरी ने बोला कि नो फ्री लंच, टैक्स के रूप में आप कमाओ या आपके दूसरे कमाई जितनी भी है वो बजट में दिखाओ, दिखाने के बाद फैसला लो कि ऐसे मैं खर्च उठाऊंगा। कौन इसको नकार रहा है? मगर आपके असेंबली में तो कम से कम खुलेआम रखो, उसको पारित करो और पेमेंट उसके तहत करो। अगर ऐसा नहीं होता, बर्डन शिफ्ट किसी और को कर रही हो, आपके ऊपर बर्डन नहीं है, जो कि आपने दिया वो वायदा आपने दिया, मगर बर्डन आपके ऊपर नहीं है, किसी और के ऊपर शिफ्ट कर रही हो। जैसे पिछले 4-5 साल से हमने पावर सेक्टर का रिफॉर्म कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बहुत सारे स्टेट्स में फ्री में बांट लिया, उसका पेमेंट सरकार जो उस वायदे के तहत जीतकर सरकार बनाया, वो तो उसका प्रावधान करना है, वो नहीं किया, अक्यूमुलेट होते आया बकाया, उसको
Well, Mr. Prakash Luhia joins us for a quick chat. Mr. Luhia, thank you so much for joining us. The state of Uttar Pradesh is a land with very fertile land, good for food processing and agriculture both, and has very significant amount of crops. So, what do you think is the future when it comes to food processing in the state, sir?